7 rounds of the candidates saw action and results most people could not have predicted. The opening round set the tone with creative and fighting chess, but ended with balanced results. In round 2, the unthinkable happened. Vidit Gujrathi snapped Hikaru Nakamura's 47-game unbeaten streak with a novelty and 3 explosive sacrifices. In fact, every game of round 2 ended with a decisive result. On day 3, Praggnanandhaa R employed a surprising gambit to unsettle his more experienced countryman, and later with a storming g-pawn, Prag found the advantage he needed to finish it off. Round 4 saw 3 draws and 1 decisive game, with Jan Nepomniachtchi showing why he won back-to-back candidates tournaments, with a victory against Vidit Gujrathi, taking advantage of Vidit's time trouble before move 40. The 5th round had the youngest participant, Gukesh D, join the lead after taking down Abbasov, and in order to stay in the lead, Nepo miraculously survived a nearly losing position against Prag's insane preparation. Also, Hikaru kept his chances alive after a big win against Alireza Firouzja. Gukesh and Nepo remained in the lead with round 6 draws, while Vidit and Prag scored impressive wins. In round 7, Alireza and Gukesh's game turned into bullet chess, with both players falling below 10 seconds on the clock. Alireza trapped Gukesh's king in the corner and even had mate coming. It was a well-needed win for Alireza, who had been struggling so far in the tournament. At the end of round 7, the players entered another rest day. Before the start of the candidates, these were Magnus's predictions. While Nepo is an unstoppable force in the candidates, it would have been hard to foresee the rest of the standings going into the halfway point. Will Nepo stride to a 3rd consecutive victory, or will we see some shakeups in the following rounds? Only time will tell. Hello, chat. We are live with pre-moves candidates, day 8. Kya haal chal hai, chat? Second half of the candidates, we are all set to know who is going to be the next World Championship challenger. Welcome, Rakesh bhai. Welcome, Rucha. How are you feeling today? आज के लिए मतलब, कैसी vibes कैसी आ रही हैं आपको? Hello, chat. Welcome. बहुत मजा आने वाला है. And second half of the tournament start हो रहा है. एंड मेरे को तो लगता है ना आज हमें बहुत सारा मतलब मसालेदार गेम्स मिलेंगे विथ प्लेंटी ऑफ मतलब ऐसे एक्शन मोमेंट्स. एंड मेरे को तो लग रहा है भाई आज कम से कम 2 या 3 रिजल्ट लगेंगे होपफुली इन इंडिया फेवर. बट ये है मेरा प्रेडिक्शन. रूचा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टुडे? Yes, hello chat. How are you doing today? And this is very exciting day today. And we are starting the second half of the tournament. इसका मतलब है जो players पहले round में खेल चुके हैं, they will be playing against each other again with reverse colors. So this is the second half. And just to remind you all, this is a double round robin. That means they will face each other twice. And also, in first round, they had all drawn against each other. There were no results. So it can be very interesting to know what will happen today. Some players are very ambitious. Some are trying to make a comeback. So players are approaching the second half with very different attitudes here. What do you think, Sahil? Yeah, I absolutely agree. I think aaj ka, every day chat, we'll have players who will basically get knocked out from the first place. हर दिन कोई ऐसा प्लेयर हमें मिलेगा जिसके चांसेस कैंडिडेट जीतने के 0 हो जाएंगे. Every single day chat. तो निरंजन भाई, जल्दी से हमारे लिए बढ़िया से ताजा गर्मा गर्म जो ग्राफिक आप लाते हैं वो ले आए. हम देखें क्या हुआ पिछले दिन और फिर हम अगले दिन के जल्द देखेंगे. Let's go chat. Let's go. Okay, so we are starting with the women's section, and yesterday was a rest day. So all the players have been rested. As there was an interview, Sahil, right? You asked Praggnanandhaa what are his plans for the rest day, and he said, of course, to rest. Just like that, all the players must have taken a good rest. And here we have the results for the previous game, and we saw 3 draws, only a very unfortunate result for our Indian player Vaishali, but I hope she will make a comeback today. Yeah, Rucha, good point. But Rakesh bhai, would love to ask you on this. We already saw that yesterday, last round, Humpy drew, Vaishali lost. I think आज, as you will see, उनका आपस में match होगा.
दिस इज डू और डाई ऑलरेडी. मुझे लग रहा है कि अगर आज जो प्लेयर उन दोनों में से हारेगा, उनके चांसेस कैंडिडेट जीतने के गो डाउन टू अ बिग जीरो. व्हाट वुड बी योर प्रेडिक्शन देयर, राकेश भाई? जी बिल्कुल, हम अगर स्टैंडिंग्स दिखा पाए, विच विल एड मोर इम्पोर्टेंस टू व्हाट साहिल भाई इज टॉकिंग अबाउट. क्योंकि ना चैट ऐसा है कि हमेशा पेयरिंग्स मतलब फीडे ऐसे प्लान करते हैं लाइक राउंड 1 एंड राउंड 8, क्योंकि शुरू के राउंड्स में ना सेम कंट्री के लोग खेलते हैं. दैट्स व्हाई यू सी हम्पी मैम हु इज at 2.5 out of 7, even Vaishali with the same score, they'll face off just now to avoid collusion in the last round. मतलब just any kind of helping each other of the same country. But this means कि एक प्लेयर या तो 3.5 पे जाएगा और उसका मतलब दूसरा प्लेयर 2.5 पे रह जाएगा, which is very difficult to cross. And the problem is, Sahil and Rucha, that Tan Zongi is already at 5 points. मतलब in fact it's sad to see that Humpy ji and Vaishali के points मिला के it's the same as Tan. Man, that is crazy. That's a good point. Yes, indeed. And let me remind you, पहले राउंड में वैशाली और हम्पी खेल चुके हैं फर्स्ट सेगमेंट में, और उनका ड्रॉ हुआ था. एंड मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि आज भी शायद ड्रॉ होगा, पर मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए. आई वांट वन प्लेयर टू गो फॉरवर्ड एंड टू फाइट फॉर दैट स्पॉट टू बी अ चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप. रुचा एंड राकेश, आई हैव अ क्वेश्चन. ये तान जोंगी को जल्दी क्या है? भाई इतना कहाँ दौड़ना है? कहाँ का क्या क्या हो रहा है भाई? डिस्काउंट मिल रहा है, कोई कूपन कोड है आगे 8th राउंड में? मतलब 5 पॉइंट लेके बैठी है यार वो. 5 पॉइंट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हर, बट उनकी वजह से इंडियन प्लेयर्स के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं. एंड यू नो व्हाट राकेश भाई, आई एब्सोल्युटली एग्री एंड विद रुचा एज वेल कि ड्रॉ नहीं होना चाहिए. ड्रॉ से किसी का भी बेनिफिट नहीं है. आज एक प्लेयर शायद नॉकआउट हो जाए फर्स्ट प्लेस से, बट दूसरे प्लेयर के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे. सो टुडे इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल मैच इन द वुमेन सेक्शन चैट, एंड maybe we can have a look at the pairings of the women section directly because एक ही मैच है. would love to see क्या चल रहा है, and then we can slowly move to the open section. And thank you Niranjan bhai. First of all, Tan Zongi versus Tingji Lee. If she wins, Rakesh bhai, she is the Nepo of the women's section. What do we do? क्या करें हम? बिल्कुल बिल्कुल. एंड चैट को रिमाइंड करना चाहूंगा गाइस, टैन जोंगी इज द ओनली प्लेयर ओपन और वुमेन्स कैंडिडेट्स में मिला के 16 प्लेयर में से वो अकेली है जिसको पता है द फीलिंग ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन. No other players have been a world champion. So Tan Zhang is already, guys, been there, done that. So बहुत ही interesting matchup. And in fact, Lee Tingji beat Tan Zongi in the finals of the 2022 women's candidates, मतलब जो पिछला candidates, and then Lee qualified to play Ju and June in the title, but sadly she lost there. But just giving you this info, chat, क्योंकि it means Lee can beat Tan Zongi. एंड उसका मतलब है इफ शी बीट्स, एंड वी आर ऑल प्रेइंग गाइस कि वो हो, ताकि द टूर्नामेंट इज ब्लोन वाइड ओपन एंड देन इवन आवर इंडियन वुमेन हैव अ चांस. रुचा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस पेयरिंग्स? Yes, of course. It is a good pairing that both Chinese players are facing. Currently, Tan is on the first spot and Li Tingji is on the 3rd place. So we hope that she will be able to stop the leader. And just I was looking at the pairing and how the players have been doing so far, and I just want to remind you that there are only 2 players who haven't yet scored a win in the women's section so far, and it is Humpy Koneru and Anna Muschok. So these 2 That's players a great stat. That's a great stat, Rucha. So these 2 players are really looking forward to have that, feeling of winning. And I think Humpy is also looking forward to have a comeback, and I believe she can do it. Of course, I'm rooting for both the players, but I really want one player to go ahead, and it can be either of them. So Rucha, what's your prediction there? White Humpy versus Black Vaishali. Who wins this match and who gets... Let me remind chat, जो आज हारेगा, they are already at the bottom of the table. They will, okay, maybe there is some freak, instead of nature, जहां पे वो लगातार 7 जीत के qualify कर जाए, but we know that's not happening. So whosoever loses, उनके chances go down to 0 for candidates. So Rucha, what's your prediction? Who gets knocked out today and who gets his chances, gets some reinforcement there? So इस गेम में Humpy is playing white and Vaishali is playing black. और मैं हम्पी के
पहले गेम देख रही थी. Of course, at this point, all of the players they have played 3 white and 3 black. So I saw that Humpy has played 3 times white, and all the times she played first move d4. So I think she will be going with the same going forward. And I expect Vaishali to go for Queen's Gambit Decline, which is a very solid opening. And मुझे चाहिए कि इस board पे result हो, but my prediction will be a draw here because that opening is very solid for both of them. Rakesh bhai, give me Wow, some hope, man. Give me some hope there. I have a feeling that this will be a bloody fight and मतलब बहुत ही there will be ups and downs. मतलब कोई winning होगा फिर वापस game change evaluation bar is going to have fun tonight. And overall I feel somehow somewhere Humpy जगह वो experience will pull through, and I'm predicting a white win. मतलब Humpy will win today. That's my prediction. So टिको भाई आपको क्या लगता है? मैं ऐसी छलांग मार रहा हूं ना उस बोर्ड के अंदर जो आपने प्रेडिक्शन करी अभी, बिकॉज ड्रॉ पे जो मुझे लग रहा है, रुचा सेड देयर आर ग्रेट चांसेस, आई एग्री विद दैट, बट अगर वो ड्रॉ करते हैं दे विल स्टिल बी एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद ओनली 6 राउंड्स टू गो. आई थिंक दोनों के चांसेस, स्पेशली इफ टान जोंगी विंस, इट्स ओवर. It's basically over on the spot. You can see she goes to 6 and we are on 3 with that's with 6 rounds to go. We are not covering up a difference of 3 points. There is no way on earth. So really hoping one of them wins. And Humpy having the white pieces, I am going to bet money. Okay, not money, but bet my feelings there ki Humpy wins that match. Chat, what is your prediction? Humpy will be the winner in this board. Yeah, today. Has to be because she's also a stronger player. So we've not seen her strike yet. Unka wo law of balance aayega, and maybe if she wins one game, she wins like 4 in a row. That could happen. Yes, and yes. Chat, do let us know your prediction in the comments, and we have a poll up. So if you haven't voted, do vote there. And Vaishali ka 34%, draw 41%, and Humpy 25%. So I guess Rucha, Chat आपसे एग्री कर रहे विद द ड्रॉ प्रेडिक्शन देयर. Yeah, 40% draw. मुझे and लगता है मेरा प्रेडिक्शन ड्रॉ था, बट लाइक मैं देख रही थी प्रीवियस गेम्स और both of the players have had those situations where they got in time scramble. So अगर इस गेम में time scramble होगा दोनों के बीच में तो रिजल्ट पकाया जाएगा इसमें, इस बोर्ड पे, one way or another way. Yup, absolutely agree. So that is amazing. Let's see क्या होता है इस critical match में. Tomorrow we might be cheering for a player, one player might be out. इसके साथ ही निरंजन भाई, क्या हम रिजल्ट्स देख सकते हैं ओपन सेक्शन के पिछले राउंड में? काफी बोलते ना एक्साइटिंग राउंड था. स्टार्ट ऑफ हुआ था बहुत इक्वलिश और एंड में हमें बहुत खतरनाक बैटल्स देखने को मिली. राकेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, what a heart-breaking loss for Gukesh. And Rucha, I mean, I'm pretty sure you saw that moment live. I mean, his expressions, his body language, I mean, he was just completely broken. And chat, मेरा सवाल आपसे है ये, yes या no में जवाब देना, मुझे कंसोल मत करना बस. Can Gukesh come back after that loss in his mindset? Because this is the kind of loss he had at the Olympiad. You remember जब वो हुआ था, like he lost to Nodirbek, it's almost impossible to come back. But we know he's the kind of guy with the mentality who can. So yes or no, chat, and Rucha and Rakesh bhai, what do you think? Will he come back from this? So before we move on, I just want to tell everyone here that today is actually birthday of Garry Kasparov, Grandmaster Garry Kasparov. It's birthday of him today, and he is known as one of the strongest player, and he's also the king of comebacks. So I think that these players will be inspired from him. So Gukesh and also other players to make a comeback at this stage. So I definitely believe that he can make a comeback and he will make a comeback, and I'm rooting for him. Nice. Rakesh bhai. जी बिल्कुल. I was just updating a poll in the chat where I'm asking you guys, can Gukesh make a comeback? And early results are saying yes, of course. मतलब yes और yes, of course. मैंने जानबूझ के 2 दिए थे. That is the second वाले ऑप्शन को जो चूज करें. You are with me because chat, Gukesh has like the maturity, the mental strength of a champion, and मेरे को 100% भरोसा है कि he will make a comeback and we'll be seeing him fighting for the top spot again. And Tiku bhai mentioned ना वो Nodirbek वाला heartbreaking loss in the Olympiad.
again he made a comeback. In fact, if chat you saw Vishy Anand's dinner video with all the Yes, candidates. I was just thinking about it, and also in chat, Yeah, I think Shrestha, she commented about it. Yes, go on. yeah, exactly. And there, there Gukesh mentioned, it's he he would take a loss before the rest day than any other round because now usko time milta hai to digest that in, and he comes out with a new mindset. So I think definitely this rest day was perfect for Gukesh. So I'm rooting for him. Chat, what do you guys think? That was a good video, guys. If you haven't watched it, you can watch it on chess.com YouTube channel. And in that, it's like Vishy Anand is hosting a dinner party, and Gukesh is the only one saying that he's okay to have a rest day. And this is exactly what happened. And I hope that it will be a good thing for him to lose before a rest day. And everybody else was surprised, right? Yeah. I would say it's not a good thing he loses. Comparatively, it's okay. I mean, Yeah, exactly. Yeah. So Chat Rakesh, भाई मतलब it was not मतलब गुकेश का year on of course मतलब this was objectively मतलब पूरे second half में comeback करेगा नहीं या tournament में comeback करेगा. We know you guys are waiting for the pairings but उसके पहले standings की तरफ आ जाता है टिक्कू भाई. Rakesh bhai, you know what? Gukesh could have been right on top. He was completely winning, but he's still in second place. That's the luxury he has. And Prag or Caruana tied उनके साथ. तो now Prag and Caruana and Gukesh all three in second place. Nepo के ना मतलब पीछे उसकी neck पे breathe करते हुए कि भाई हम पीछे ही है तो पीछे बस एक गलती कर और हम कैच अप कर लेंगे. एंड वहां पे एक इंटरेस्टिंग पेयरिंग है वो है विदित गुजराती की. राकेश भाई my question to you is before we look at the pairings एक बहुत डिस्टर्बिंग सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि विदित लूजेस, ठीक है, एंड लेट्स से नेपो विंस, ही गोस टू 5.5, विदित 3.5. डू यू थिंक विदित के चांसेस आर ओवर और डू यू थिंक देयर स्टिल सम होप? भाई चांसेस तो ओवर मतलब एज अ वीडी फैन मैं तो बोलूंगा अनलेस इट्स मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल तब तक तो सपोर्ट तो पूरा एंड कोशिश भी पूरी रहेगी बट इट जस्ट गेट्स डिफिकल्ट एंड चैट प्रॉब्लम क्या पता है अभी पहले अपन बोल रहे थे चलो शुरू में हार गए कोई प्रॉब्लम नहीं टाइम है कमबैक का सडनली ना अभी ये गेम के बाद जो अभी टिक्कू भाई ऐसे एक बहुत ही गंदी घिनौनी हरकत कर रहे जो जिसमें अज्यूम करने बोल रहे कि वीडी लूजेस बट उसके बाद ना चैट 6 ही राउंड बचते हैं एंड इन 6 राउंड्स टू मेक अप 2 पॉइंट्स इज वेरी डिफिकल्ट. Extremely difficult. And Rucha, I would love to get your opinion on this. As we look at the pairings, Rakesh bhai, तो हमें बहुत दुख होने वाला है. And before we look at the pairings, Niranjan bhai has a guest for us. Niranjan bhai, मतलब जल्दी से हमें एक फोटो दिखा दी जब दिखाने वाले थे. हम देखना चाहेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट कौन है. हमने चैट में से उनको पिक करा है चैलेंज की वजह से. राकेश भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस अस टू द स्पेशल गेस्ट टुडे. Hello, chat. Can we see our special guest? So this is Bhavik Ahuja, जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट पे उनके फेवरेट पिक किए थे और उन्होंने बोला था he is a big fan of I think Prag VD and Gukesh, and the reason is कि those are the only two people जिनके साथ मतलब भाविक भाई का एक सेल्फी है. So welcome भाविक भाई. Tell us whom are you rooting for and what are your thoughts on this candidates overall? कैसे लग रहा? Hello everyone, thank you so much for having me here. So as I said, I'm a huge fan of both Gukesh and VD. So I actually met Gukesh in Delhi International in 2022 and VD in Prague Masters. तो तब से मैं दोनों को पूरा follow कर रहा हूँ. And I think अभी just juncture में last match Gukesh had a really heartbreaking loss. And अगर हम विदित के अभी next कुछ pairings देखें तो he basically has just one white against Nijat, Abbasov, and rest all of his games are either against really top players, उसका Hikaru के साथ white है or he doesn't really have any more whites left. So if he wants to catch up to Nepo, this is his golden chance to strike. So I think Vidit is going to go all guns blazing in this match. Because this is a do or die type situation for him if he really wants to come close. But I still think Gukesh is going to play solid today and end में draw होएगा, but VD काफी push करने वाला है. So that's what I feel is going to happen. Yeah, and there you see the two photos, but एक photo में I think VD शायद नजर नहीं आ रहे दोनों. But yes, मैं पूछने वाली थी, can we have the photo and yeah, there you go. Thank you, Dilip bhai. Yes, and Bhavik bhai, big fan, but
I would like to ask, we give the difficult choice to you. भाई आप दोनों के फैन है, हम सब यहाँ दोनों के फैन है. आपको एक बंदा चूज करना है या एक प्रेडिक्शन करनी है आज के राउंड के लिए, तो आप क्या करोगे? सी वैसे तो मेरे को लगता है ड्रॉ होएगा, बट अगर एक को चूज करना पड़ेगा तो आज वीडी बहुत प्रेस करेगा, सो वीडी हैज Okay. ग्रेटर चांसेस इन माय ओपिनियन. And predictions बोलते ही we have the pairings on screen chat. Wow, क्या what a खतर- lineup there. You know, we have a lot to go through there, chat. You know what? We can directly start with the Vidit against Gukesh match because we have Bhavik with us. Yeah. Bhavik भाई, जब आपने मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाई थी, तब सोचा था कि यार कैंडिडेट में 3 इंडियन होंगे? नहीं, no idea. Like I'm actually so shocked, but this is probably the best thing that could have possibly happened. Like पांच Indians candidates में nothing can get better than this. Nice. So you So are in back. this game, yeah, sorry, go Yeah, ahead. Yeah, so you are making a prediction on VD, right, Bhavik bhai? That's your prediction if we had to choose one. See, if I have to choose the VD, but मेरा initial prediction is a draw. Draw. That's Cool, a safe answer. So what's your prediction, Rucha, there on that game? Actually, I was looking at their games, Vidit और Gukesh दोनों के game देख रही थी मैं, और इस tournament में Vidit has played E4 in all the 3 games so far, and as we are all his fans, we have been following his career. He has been switching from E4 and D4. So मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या लगता है इस game में क्या होगा? Will he keep on continuing with E4 or will he switch back to D4? Rakesh, what do you think? I think he will go for E4, and this is what he told on Chesscom stream recently, that this is Vidit 2.0, who likes to fight, who wants to go for the initiative. और भाई वो जा रहा है, he's playing these crazy moves, and to be very honest, I did not expect VD to, have like so many decisive games, मतलब win, loss. Normally he's a very solid player. So it's great to see this, and मेरे को तो लगता है टीवी में ना आज वापस एक सैक्रिफाइस देख सकते हैं, बिशप सैक्रिफाइस, जो बिशप G4 खेला था उसने गुकेश के अगेंस्ट इन राउंड 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट, ऐसा कुछ तो रिपीट होने वाला है, इससे मुझे लग रहा है. राकेश Chad, भाई, आपको आपने याद है क्या वो बिशप G4 वाला मूव? Those who were there on round 1, are you हाँ, here हाँ. today? बिल्कुल चैट को सब याद है. एंड यू नो व्हाट द मेन थिंग इज, राकेश भाई, भविक एंड रुचा, this is like a heartbreaking decision because अगर VD जीतते हैं तो Gukesh would lose 2 in a row. He would go from being the leader to being in like 5th or 6th place. अगर Gukesh जीतते हैं then VD is almost out of contention. So I really don't know what to predict here because I want both to win. कोई ऐसा होता नहीं दोनों को पॉइंट मिल जाए भाई, कि ऐसा कोई स्कीम हो इस साइड की? कोई नहीं. नहीं, sadly नहीं. It's And like now chat we have to ऐसा, choose. Now it's time to choose. We cannot, we want both of them, but only one can go ahead from here. absolutely. what? Yeah. What is your prediction, Rucha? It's a difficult question, and I think it will be a draw, even though I don't want it. Because Gukesh will mostly go with E4, E5, and we might see something Roy Lopez again today, which will be a very positional, solid battle. So yeah, again, I don't want it, but I predict a draw because of the opening choice. If it happens that we will see Roy Lopez there. 2 draws, Rakesh bhai. What's your prediction? I have a feeling, Gukesh will make a comeback today. पता नहीं क्यों. मतलब बिग वीडी फैन देयर, बट मेरे को लगता है ना, जो भाविक भाई का पॉइंट था कि वीडी वाइट पुश एक्स्ट्रा विथ वाइट, एंड कहीं ना कहीं वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए. बाय द वे चैट, जेंटल रिमाइंडर कि ये दोनों प्लेयर्स वीडी एंड गुकेश हैव स्ट्रगल्ड इन टाइम प्रेशर. गुकेश जो एक गेम हारा वो भी टाइम प्रेशर में ही हारा, एंड वीडी का आपने देखा ही है, ही कुड हैव हैड एटलीस्ट 1.5 पॉइंट्स मोर than his existing score. So मेरे को लगता है another time scramble, and the person who will be more confident in that time and less nervous will be the winner of this match. I am predicting a decisive result, like 60% Gukesh, 40% Vidi, but मेरे को लग रहा है रिजल्ट आएगा इसमें. By the way, मैं चैट देख रही थी और सबको, many of them, उनको लग रहा है कि इसमें Catalan होगा, that he will switch back to D4. And so far he has been going for E4 and very tactical games, but चैट को लग रहा है कि अभी इस गेम में Catalan होगा. हाँ भाई, please.
कुछ like similar सा opinion है. So I was checking इनके like last few games. So last time Vidit and Gukesh played and Vidit was back in Tata Steel का Blitz का match which was last year. And उसमें basically like they had a D4 C4 match in which Gukesh went for a Ragozin type Nimzo style like position. And उसमें Gukesh ने like काफी opening में एक pawn up हो गया था and he was pushing the whole game. So I feel like something like this, Gukesh might Vidit might feel ki like agar he like gets like a slight opening advantage, like a technical positional advantage, and he like keeps like pushing that against Gukesh, he might tilt. So I feel D4 is on the cards. Very much possible that Vidit goes for that as well. Mrinal bhai asking the real question in the chat. I agree with you there, Bhavik bhai. Who will meditate the most? Because we might have a scene कि गुकेश आंखें बंद करके पीछे बैठा है, विदित आगे सर बेंड करके आंखें बंद करके बैठा है, दोनों प्लेयर बस आंखें बंद करके बैठे हैं. आर्बिटर आए भाई दोनों सोना ही है, कोई तो खेल लो भाई. So will we see that? We will see a frame today जहां पे दोनों लोग आंखें बंद करके meditate कर रहे हैं. What do you think? Absolutely, Yeah, possible. absolutely. हो सकता है. और as you mentioned earlier, they have been in time pressure before, so I think today it will be decisive who can keep more time on the clock as well. and थोड़ा भाई चैट से बातें कर लेते हैं टिको भाई. आज हमने चैट के ज्यादा कमेंट्स नहीं ले. आकाश अग्रवाल बोल रहे हैं वीडी डज इट ट्वाइस एंड ही इज राइट. पहले ना वीडी गेम के शुरू में मतलब जैसे एज सून एज ही रीचेस द बोर्ड करते हैं, अपोनेंट से शेक हैंड करते हैं, और फिर जब भी आर्बिटर बोलते हैं स्टार्ट योर गेम्स, फिर बीडी में वापस वो एक 35-40 सेकेंड्स में सेकेंड टाइम में मेडिटेट करता है. तो वी हैव अ बिग बिग मेडिटेशन बैटल फॉर श्योर. और आई थिंक लेट्स इफ वी टेक द रिजल्ट्स ऑफ आवर पोल, विदित 45%, ड्रॉ है 25% और गुकेश है 30%. Very, very interesting. पता है गुकेश gets his reinforcement, no, every few minutes he will close his eyes, so technically the amount of meditation he does is higher. तो देखना पड़ेगा भाई who wins that competition. Yeah. अभी we have chess boxing. अभी next we will have chess meditation. Yeah, true. Nice. And इसके साथ ही क्या हम एक यूएस बैटल के प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकते हैं राकेश भाई? आई थिंक वी हैव हिकारू अगेंस्ट कारुआना, एंड वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कारुआना जीत जाते हैं तो हिकारू भी वीडी वाली सिचुएशन में है. ही माइट एक्चुअली बी क्लोज टू गेटिंग नॉक्ड आउट फ्रॉम फर्स्ट प्लेस. तो हिकारू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस एवरीवन? I feel this is going to be another hard fought draw there, क्योंकि Fabi is a very very strong player, would not want to lose his lead. और अभी तक कारुआना हारे नहीं है ये, बट एपिक क्लैश है चैट, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 3 वर्सेस वर्ल्ड नंबर 2 है इसमें. एज यू कैन सी इवन आफ्टर व्हाट लाइक 33 प्लस 49 गेम्स, इफ माय मैथ, 49 गेम्स के बाद भी देयर स्कोर इज पूरा इक्वल, मतलब 8 विंस ईच एंड 33 ड्रॉज. सो you might expect a hard fought draw in this game, but I absolutely agree with you Tiku bhai, क्योंकि ना वो जो वीडी का सिचुएशन और हिकारू का सिचुएशन वेरी सिमिलर. आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ज्यादा राउंड्स बचे नहीं है, सो you might see हिकारू pushing here, but overall my prediction is a draw. What do you think भाविक भाई, क्या होगा इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वो दोनों ही लाइक इस गेम में क्या होगा कि हिकारू डेफिनेटली बहुत पुश करने वाला है. And recently, Hikaru has had a lot of success with white against Fabi. So I think Grand Swiss like 4 nights का game हुआ था और उसने completely outplay कर दिया था Fabi को. And I feel ये एक ऐसा game है जिसमें like they both know कि very high chance कि आज Nepo Abbasov का हराने वाला है. And if that does happen, then they will be about 1 point or 1.5 points away from Abbasov if they like draw this game. So definitely feel like कि चलो let's actually try to catch up with Nepo, and Hikaru is definitely going to press. और अगर Fabi को भी लगता है कि हम भी कोशिश करते हैं to go for a win and वो दोनों win के लिए जाते हैं, तो high chance I feel कि Hikaru जीतेगा, वरना likely it's a draw. But I think it's 2 results here, Hikaru या फिर draw mostly. Rucha, what's your prediction on this one? This is the most difficult game to predict out of all that we have here today. Or this is so difficult to predict because they both have very different personalities, styles, chess styles, and it's going to be a clash, like Nakamura will be going very aggressive, Caruana is very solid, and is lineup mein, there are 2 players who have not lost a single game so far, and Fabi is one of them, other being Nepo, of course. So they are playing very, very solid. So I think it will be very difficult for Fabi to lose
today, unless Hikaru gets something great out of opening or puts a lot of pressure on time. So I will predict here in favor of Fabi. I have to point out one thing though. Fabi पिछले 2 गेम से वर्स ही रहे हैं भाई दोनों इंडियंस के साथ. पहले वीडी के साथ तो पूरे लॉस थे, वो तो वीडी फाइंड नहीं कर पाया टाइम प्रेशर में. प्रग के साथ भी ही वाज स्लाइटली वर्स विद वाइट, जहां प्रग ने खुद बोला कि आई थॉट एट वन पॉइंट आई वाज बेटर बट इट वाज नॉट इनफ. तो फैबी का वो मतलब बोलते ना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक्स फैक्टर मिसिंग है भाई. एक्स फैक्टर इज एक्चुअली मिसिंग. लेकिन हिकारू ने खुद वो बिशप G3 मिस किया था अगेंस्ट नेपो, याद है जब वो बिशप सैक्रिफाइस मारा 3 पीस फॉर अ क्वीन. सो बोथ प्लेयर्स वाइब में नहीं है. मुझे लग रहा है एक बंदा कोई ब्लंडर करेगा एंड दूसरे बंदे की फॉर्म वापस आ जाएगी. आई रियली डोंट नो हु दैट गाय इज, विल ब्लंडर दो. सो चैट आपकी प्रेडिक्शन पढ़ते हैं. चैट कह रही है 45% ड्रॉ, 37% हिकारू, 18% फैबी. भाई फैबी अच्छा है, हमारी स्ट्रीम नहीं देखता है भाई, रो देगा वो. तो 18% फैबी आज इस स्ट्रीम में. सही में भाई टॉपर है भाई वो. लिटरली ही इज द टॉप सीड ऑफ दिस इवेंट, बट बेचारे को 17% कम होते हुए. और difficult player, you know, like even if it doesn't win, he also doesn't lose. So that's the thing about Fabi. So he's a very, very solid player. Or openings, I don't know. Hikaru has been playing E4 so far throughout the whole tournament. So he can repeat it again. He can go E4 again, wanting to play more aggressively. Or Fabi faced E4 2 times in this tournament, and once he went for E5 and once for the Sicilian. So I'm also interested to see what he chooses, if he wants to go for some solid with E5, or he wants to mix things up, spice things up with Sicilian. Yep. And that, yeah, please. Sorry, I think Sicilian होने वाला है, because जब भी 4 nights होता है Hikaru versus Fabi में, somehow Hikaru just gets an edge. So I feel Fabi, if he feels like that, mode of just going double edged and आज देखते हैं कि क्या होगा, कोई ना कोई जीतेगा, then definitely Sicilian होने वाला है. So excited for that. Yeah, that will be epic to watch. And you know what, we'll be cheering for both players depending on the standings. But जो अगला मैचअप है ना यार, उसमें तो क्लियर हम एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हमने आज तक सपोर्ट नहीं करा, राकेश भाई. Because the next pairing is Nepo against Abbasov, and Nepo has the white pieces. So Abbasov, who's been kind of struggling, who barely survived against VD, lost to 2 Indians in a row. Rucha, I mean, just directly let's go to the prediction. What's your prediction for that game? Okay, so here we have a clear favorite, and just want to point out the fact that Nepo hasn't lost even one game, and Abbasov still has to win one game. So there is a big clash, and it is not about the strength of the players, but the current form that they are in. So I think going in this board, we have a clear favorite in Nepo. He's leading the field, but we definitely want Abbasov to bring him down, bring the leader down, so as to make this field wide open. So yes, my prediction is in favor of Nepo as well here. राकेश भाई क्या कर, आप बताओ भाई, अब बताओ भाई, आज बताओ ना कौन है फेवरेट भाई. पिछले 7 दिन से सुन रहा भाई, आज बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो. I am actually supporting Abbasov now. I know how the tables have turned. जो पलटी मारी है, मतलब जो सारे जज्बात बदल दिए सब कुछ. चैट Abbasov ओपी स्पैम करना आज, क्योंकि हमको आज चाहिए पूरा सपोर्ट निजात के लिए. एंड ऑन अ सीरियस नोट चैट, मैंने ना एक वीडियो देखा चेसकॉम ग्लोबल चैनल पे विद गौतम चेस, मतलब लेवी और Abbasov का इंटरव्यू था बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड. और उसमें ना भाई मैं थोड़े बहुत ब्राउनी पॉइंट सुनकर दिल जीत लिया Abbasov ने, क्योंकि बहुत ही ऐसे शांत सा कैरेक्टर उसका, उसने पूरी उसकी जर्नी बताई चेस के बारे में. उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई चैट, दैट उसका जो ACL टेयर हुआ था, जिसके बाद सर्जरी हुई थी, तो एक ब्रेस जैसा पहना था उसने उसके नी पे. बट द गुड न्यूज टिकू भाई और चैट फॉर Abbasov फैंस है कि उसने बोला था कि रेस्ट डे के बाद वो ब्रेस निकाल देगा, एंड ही कैन वॉक मोर फ्रीली. एंड ही यूज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म दैट he is normally himself very stronger in the second half of the tournament. तो उसने बोला एक comment लेवी को कि as the players will get tired, I will like to play my best chess at that point. So we might expect some good things from Abbasov. I'm not predicting a win, chat, but मेरे को लगता है ना कि Abbasov draw कर लेगा ये वाला game, and
even that's a good sign if we Mhm. from the Indian perspective. But I think I'm actually I know Abbasov has lost all his black games, but he was really close against Prag. So I'm going to predict a draw in this one. भाविक भाई आपको क्या लगता है? I think आज definitely Nepo जीतने वाला है. So if we just look at Nepo, वो बहुत ज़्यादा methodically जा रहा है in this tournament. Every time he does this, so last 35 candidates game से he's been leading the tournament and he has timed this perfectly. तो अगर आप देखोगे उसने basically वाइट से 2 गेम्स जीते. He pressed against Vidit, he pressed against Firouzja and he won those 2 games, right? And अभी वाले जो उसके गेम्स बचे हैं उनमें like उसके बाकी के जो रिमेनिंग गेम्स है विद वाइट देयर अगेंस्ट प्रीटी टफ ओपोनेंट्स एंड लाइक मैंने चेस बाय द नंबर्स का एक पोस्ट देखा था कुछ टाइम पहले. तो आई थिंक 80% चांस है कि इस बार +3 या +4 पे कोई जीतने वाला है कैंडिडेट्स, यानी 8.5 या 9 पॉइंट्स पे यू आर गोइंग टू बी टाइड फर्स्ट एटलीस्ट. सो नेपो नोस कि आज का गेम कुछ भी हो जाए, ही जस्ट हैज टू crush Abbasov because this is his best chance. And if he gets a 1-point lead over the rest of the field after today, this is his tournament. So I think Aaj he's going to go all guns blazing and today is going to be Nepo's win for sure. Chat, you know what, कई बार ना वो, I know RCB calculations है, but we need Nijat to do something today. तो एक बार ना Abbasov OP spam कर दो भाई for the one and only time in this tournament. Let's go भाई, Abbasov OP in the chat, spam कर दो भाई. 1 सेकंड के लिए ये Chesscom मतलब बोलते हैं ना उज़्बेकिस्तान अज़रबैजान बन जाना चाहिए जहां से भी वो है. जल्दी से स्पैम कर दो भाई Abbasov OP भाई. लेट्स होप सो ही स्टॉप्स द लीडर नेपो, ताकि बाकी सब इंडियन प्लेयर्स के लिए थोड़ा बैटल इजी हो जाए. अगर नेपो जीत जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार. Abbasov OP सब स्पैम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चैट. एंड इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल गेम की तरफ. दैट इज प्रग अगेंस्ट फिरोuzja. फिरोuzja कमिंग ऑफ विद अ विन. कैसे विन, कहां से विन आया मुझे भी नहीं पता, बट आ गया. उनका कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव हुआ होगा. एंड Prag, who's also in great form and has the white pieces. कितना इंपॉर्टेंट गेम है राकेश भाई. I'll tell you why, because if Prag wins and Nepo draws, तो Prag के पास फिर से लीड आ जाएगी. He'll be the tied leader. So what, if I'm not mistaken there, right? I think that's correct calculation. So what's your prediction for this game, Rakesh bhai? Yeah, I think firstly that calculation was correct, Tiku bhai. और Prag has been, playing very enterprising chess, और वो ना मजेदार नॉवेल्टीज निकाल के उसके टीम के साथ ना थोड़ा सिजलिंग ओपनिंग प्रेप के साथ वो कुछ तो आज लेके आएगा. एंड फिरोuzja ने बोल दिया था कि ही एट वन पॉइंट ही हैज नथिंग टू लूज. मतलब लास्ट राउंड के जीतने के बाद इंटरव्यू में उसने बोला आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम गोइंग टू प्ले डबल एट चेस. मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, आर या पार आ जाओ. सो ये गेम में अगेन आई एम प्रेडिक्टिंग अ रिजल्ट फॉर श्योर, एंड आई जस्ट फील Prag is on another planet in this tournament, and he's playing very very good chess, and I'm predicting a Prag win. Gukesh का बदला लेना पड़ेगा Prag को. जी बिल्कुल. And I really like how you put it, Rakesh, that Prag has been playing sizzling openings, like he has been playing very exciting chess, and we have been looking at his games, and he has been trying so many new things, like even in Royal Opus going for the F5 line with the black pieces, and even in other games, he's very, very creative, and he's one of the players who has been, surprising his opponents out of opening. And Firouzja, he did not start well, but he is slowly making a comeback, and this is going to be very exciting game. And Prag has played both e4 and d4 in the tournament so far, so very difficult to guess which side he will lean in. And Alireza also has been switching with e5 and c5 Sicilian, and going for Royal Opus setups. So very difficult to know what is going to happen here. Maybe Prag can also play something very different, maybe not even e4 or d4, maybe some c4 or knight f3. We never know what is going to happen. My prediction is in favor of Prag for this board. भाविक भाई. मुझे ऐसा लगता है कि आज Prag जीतेगा. अब मैं रीजनिंग भी दे देता हूँ. तो बेसिकली लाइक मोस्ट लाइकली Alireza is going to go for knight off. मुझे लगता है Prag डेफिनेटली e4 खेलेगा. एंड रीजन फॉर दैट इज कि इस टूर्नामेंट में लाइक अब Alireza के पास कुछ भी नहीं बचा है. जैसे कि राकेश जी ने बोला कि लाइक कुछ भी खोने के लिए नहीं है. ही इज गोना गो ऑल इन, ही इज गोना ट्राई एंड विन एवरी सिंगल मैच. अगर उसे जीतना है वो सिसिलियन खेलेगा, और अगर वो नाइट ऑफ के लिए जाता है, आई एम श्योर कि स्विडलर के साथ और लाइक जो पूरी टीम है Prag की, दे आर गोइंग टू कम अप विद सम क्रेजी नोवेल्टी टुडे इन नाइट ऑफ. एंड आज वो लाइक ही इज जस्ट गोइंग टू रियली क्रश Alireza. एंड लाइक द थिंग इज
I want to cut in. Is it possible to find a novelty in Najdorf at this point? Like I don't know, जैसे H3 जैसे कोई चाल कुछ time पहले Okay, so okay, something continue. like that. I don't know, maybe something comes up. But definitely I think this is going to be a very exciting match, and even if like something out of the opening doesn't come up, I feel both of them are going to go for a win definitely. तो कोई ना कोई result तो आएगा ही, and I'm definitely rooting for Prague in this one. Bhumej Bhai saying in the chat, Abbasov win, Prag win, Gukesh and VD draw, and both the Indians are in top 3. Hypothetical है भाई, hypothetically लग रहा है, लेकिन दिल में जरूर है भाई, दिल में reality जरूर है. Let's hope so ऐसा कुछ हो कि सारे Indians top पे आ जाए. That would be absolutely epic. And yeah, I kind of feel कि this should be a win for Prag as well. I think Firouzja at the end, he did get that win, but Prag time pressure में कहीं पे भी मैंने कोई issue देखा नहीं है. So he will manage his clock really well. He will manage his play very well. And this is a golden opportunity for Prag, to join the leaders. So I think Prag will be, he knows how important this is. जैसा उन्होंने कहा, rest day पे rest, तो game day पे win by. I think it has to go that way. So he is to the point. He will win this. I have full faith. Chat की prediction देखते हैं. 80% Prag win. I don't know, हमने किसी भी और गेम में इतना क्लियर आंसर नहीं देखा ना. करेक्ट. इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था. And I think it's going to be great to see Prag winning this, and of course getting into at least a lead, or getting very much ahead in the standings there. But Tiku bhai, आपको कैसा लगा after being roasted by Prag the other day? भाई मस्त था भाई, ऐसी रोस्ट होते चले तो भाई मजे आ जाए. As long as he is playing good chess, सब कुछ accepted है भाई लाइफ में. मतलब I would totally. Sahil, you started talking about, Ali Reza's outfits, like his shirt, and you like opened a discussion. Now everybody's talking about his outfits every single day. They are trying to guess what's the price of its t-shirts and so on. It's so funny to see that. उसका क्रेडिट तो आई थिंक समय भाई को देना पड़ेगा. आई थिंक ही इज द वन हु स्टार्टेड दैट एंड वी जस्ट कंटिन्यूड. एंड आल्सो आई थिंक उसके ग्लासेस का तक वो कुछ रेट में देख रहा था, कुछ पता नहीं लुई वुइटन के ग्लासेस थे ट्विटर पे, पता नहीं, आई थिंक अनीज हीरो समबडी शेयर्ड इट. सो इट्स लाइक अब उसके हर एक कपड़े का, हर एक जूते का रेट सब अब नेट पे डाल रहे. कह रहा है मुझे अकेला छोड़ दो भाई. प्रेडिक्शन के अलावा उसके आउटफिट के प्रेडिक्शन चल रहे हैं. I think the world रोज पोस्ट भी डाल रहा है कि अली रेजा का एग्जैक्टली लाइक पूरे आउटफिट का क्या कॉस्ट था. वर्ल्ड चेस का रोज पोस्ट आ रहा है. Exactly. Chat. Yeah. I think And Atharva Sharma in chat is saying VD wins, Nepo draws, Hikaru draws, and Prag wins. So yeah, I think something like this. अगर आप भी आपके predictions डाल दो, मतलब ऐसे चारों in a comment, तो हमें भी देख पाएंगे आपको चारों results in a way क्या लग रहा है. And Overkill is the rare Ali Reza supporter today, and he believes कि Gucci Reza will make a comeback. So we will be getting that info very very soon in 2 hours. And Tico bhai, कहाँ पे देख सकते हैं chat ये live stream? Chat, you can watch the live stream आज 11:55 p.m. 12 बजे से 5 मिनट पहले on Chess24 India. There'll be Sahaj, me and Rakesh joining in from the start, and who knows when somebody joins. And by the way, we should not forget कि अनीश गिरी की predictions बाकी हैं हमारे पास. I will quickly let you know, chat. आज की उन्होंने प्रेडिक्ट किया है हिकारू कारुआना ड्रॉ, नेपो अब्बासोव अ विन फॉर नेपो, प्रग फिरोजजा ड्रॉ एंड विदित गुकेश ड्रॉ. विदित का वो जानबूझ के ड्रॉ रख रहे हैं मुझे लग रहा है हर गेम में, क्योंकि विदित अच्छा खेल रहा है जब भी वो ड्रॉ लिखते हैं. ऐसा मुझे इट्स लाइक अ सुपरस्टिशन नाउ. True. And I think going in the second half, I really want that Vidit will be having more time than the games in the first half. I really want that to happen, that shift in his games. True. एंड चैट स्ट्रीम जल्दी से लाइक करो. लेट्स गेट टू 200-300 लाइक्स. अभी हम 2 मिनट में स्ट्रीम एंड करेंगे एंड एज यूजुअल वील हैव अ चैलेंज. सो जो बंदा नंबर ऑफ रिजल्ट्स गेस करेगा आज के राउंड के करेक्टली, सबसे पहले उस बंदे को चेसकॉम मेंबरशिप मिलेगी. बाय द वे हमने वो सहज की क्वेश्चन की मेंबरशिप ऑलरेडी दे दी है, सो यू आर मिसिंग आउट. जैसे स्ट्रीम खत्म होगी डू कमेंट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स. मतलब ड्रॉ काउंट नहीं होता, विन एंड लॉसेस, नंबर ऑफ कितने रहेंगे टोटल मिला के 8 गेम्स में से. कमेंट जो करेगा सबसे पहले ही गेट्स अ चेसकॉम मेंबरशिप. चैट यहाँ पे नहीं करना है आपको. स्ट्रीम एंड होने के अपना उसके कमेंट्स में आपको प्रेडिक्ट करना है. एंड जाने से पहले भाविक भाई, आप थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन टुडे. एंड कैसा लगा आपको, मजा आया, और क्या आप रात को हमारी स्ट्रीम देखेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे इंडियंस को? बिल्कुल, बहुत मजा आ गया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मैं डेफिनेटली लाइक देखूंगा, पता नहीं ऑल नाइटर करूंगा नहीं, बट लेट्स सी.
Let's go, let's And go. Ritesh by asking, where are Samay and Tanya? Tanya will join us in round 12 chat. So she will join us back for the last 3 rounds. And Samay भाई का कहाँ कब रहते हैं वो तो समय भाई बता सकते हैं, तो इसका तो हमें भी जवाब नहीं है. So that is totally random भाई. It can happen anytime, never time, we don't know. I think he might join, आज थोड़े टाइम, क्योंकि he's missing those live camera. मतलब उसने वीडी को लाइव इंटरव्यू में बोला कि ना वीडी भाई आप मेडिटेट करते हो ना, वो देखने में बहुत मजा आया समय को, या अली रेजा का जो एक्सपेंसिव आउटफिट्स है वो भी देखने में मजा आता है. तो if Sama is missing those live cameras, he will definitely be joining anytime. भाई सरप्राइज है ये, हमको भी नहीं पता. But yes, any last words, रुचा? Yes, chat, कल संडे है तो आज all night तो बनता है, right? So I will be watching the stream and I hope you will all be there rooting for our Indian players, and this is going to be very exciting and I just can't wait. So the stream is going to be at 12 o'clock at night, right? Yep. Yes. Okay. So I'm gonna be awake all night and I hope chat you will be there with me. And chat, just to remind you, there might be a situation जहां पे कोई इंडियन प्लेयर के चांसेस आज ही खत्म हो सकते हैं. If Nepo wins, somebody loses, there is possibility every round now we might see new players get basically knocked out from any chance of first place. तो हर दिन दोनों कैटेगरी में, इवन वुमेन सेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि एक तरह के चांसेस 0 हो जाए. So don't miss out. And Bhavik bhai, any final word before we end the stream? Let's go India. कोई ना कोई तो क्वालिफाई करना चाहिए इंडिया से, बस let's hope. Yeah, hoping for that, chat. Let's go India. बिल्कुल. See you at 11:55 PM chat. Do hit the like and subscribe button. जल्दी से कमेंट जरूर करना भूलना नहीं बिल्कुल कि आपको क्या लगता है कितने रिजल्ट्स होंगे स्ट्रीम एंड होते ही. एंड मिलते हैं भाई इन अ कपल ऑफ आवर्स. लिंक हमने शेयर कर दिया है. See you chat. Bye bye. Thank you Niri bye. Take care. Keep smiling. Bye chat. Chess 24 India. हाँ.